Hello. The month of December is approaching, and the mains result has been declared, and also the mains for Indian Forest Services exam has also been conducted. So there is a like हर साल ही ऐसा होता है कि जब दिसंबर आता है तो फिल्म्स की हवाएं चलने लगती है and sometimes it's actually the time to balance your preparation between mains and between the prelims, and also December is the exact way to actually re-strategize, reconfigure and reorientate yourself for a particular strategy. How will you approach prelims for that year? Most importantly, this is exactly the moment where you should actually undo your mistakes which were you be doing in the past years, ensuring that एक हमारे पास में परफेक्ट गारंटीड कंक्रीट प्लान है कि हमारा प्रीलिम्स निकल ही रहा है, और केवल प्रीलिम्स निकलने से काम नहीं चलता है, वो कंफर्टेबली निकलना चाहिए, क्योंकि मेन थिंग इज प्रीलिम्स एग्जाम के बाद में और मेंस के बीच में लगभग 80 डेज 90 डेज का गैप है, उसमें से भी 15-20 दिन अगर आपके रिजल्ट का वेट करने में ही निकल जाते हैं तो फिर इट एक्चुअली इज अ लॉस ऑफ 25% ऑफ योर टाइम फॉर द मेंस प्रिपरेशन। और एक बारी अगर आपका बॉर्डर पे रहता है तो फिर ना तो रोटी खाई जाती है, ना तो ऑप्शनल पढ़ा जाता है, मतलब कुछ भी नहीं करा जाता है। ये तो मुझे भी पता है, सबको पता है। इस वाले केस में टुडे आई निखिल जोशी वेलकम यू टू दिस सेशन from Nurturing for UPSC, where I'll be giving you a prelims mantra, and I'll be talking about the non-negotiables in the prelims preparation in this video. Let me tell you, I have cleared 4 civil services prelims, including 3 consecutive Indian Forest Services prelims from the general merit list, and in that I have actually scored 110 plus minus like 2 to 5 marks in every time. So whatever may be the paper, whatever may be the case, whatever may be my preparation level, or let's say my background knowledge or understanding, I knew that there are some non-negotiables. If I do them and if I like focus on them, I'm gonna score this much marks. And once you come back to home from the prelims and you see that you are getting 110 marks, वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। फिर उसके बाद में फिर आप मेंस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वो आपका रहता है, क्योंकि बात क्या है कि you will feel the comfort, you will feel the confidence, you will feel the energy to actually move forward. अब वो रोज उठ रहा है, वही आंसर्स चेक कर रहा है, वही डिबेटेबल क्वेश्चंस पे चर्चा चल रही है, तो उसमें तो यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग, एंड ऑल्सो यू विल एंड अप in more and more anxiety. And also, like, majority of the telegram groups thrive on only thing that majority of the candidate actually stuck in this range of 80 85 90, and then they will come, they will discuss, they will debate, and by that way they will like make an impression of them, and फिर उसे वो प्रोडक्ट बेच देंगे। अगेन it is of no use, it is of no utility. You only need this video to ensure that कि भाई यही नॉन निगोशिएबल है, इन्हीं को एब्सोल्युटली टिक मार्क कर लो, आपका हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि हो जाएगा फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स दैट with whom I have worked with. तो देखो, my mantra is basically that I have cleared 4 civil services prelims and 3 IFOS prelims consecutively. In that, I was about 20 marks for the CSE and around about 10 marks for the IFOS. Cutoff कुछ भी रहे, जैसे in the first prelims which I have written in 2019, and in that year the cutoff was around 105. I was getting around 120 122 that year, so I hope you got. And similar is the case with like last year when the cutoff was around 88 89, and I scored I think 112 that year. So the differentiation and the difference has always been the same, because why? I knew that the for the target of 110 every year there are some questions, if you do get them wrong, I'll be going away from the cutoff, I'll be getting behind in the race. And I knew that there are some questions, if I get them right, I'll have a lead on the cutoff. So अगर 85 कट ऑफ है तो फिर I'll always be going above, फिर 93 में जाऊंगा, 95 में जाऊंगा, 97 में जाऊंगा। वही सिमिलरली अगर मैं कुछ क्वेश्चंस गलत कर रहा हूं तो I'll be going behind the cutoff.
मेरा फिर 78 बनेगा, 76 बनेगा, 84 बनेगा, या फिर 92 कट ऑफ है तो फिर 88 बनेगा, 87 बनेगा। आई होप यू गॉट द जिस्ट। ये डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चंस, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फैक्टर्स है ना, इससे एक चीज ये है कि अगर आपका एक बार ही निकलेगा तो फिर आपका हर बार ही निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका इस बार ही निकला है और अगली बार नहीं निकला है। Because this is the crux, this is the mantra, this is the basic which lies behind clearing of not only civil services prelims but forest prelims, and that too comfortably. इनमें क्या है ना कि prelims becomes a challenge for four category of students. Firstly, कि those who actually always lie in the range of plateau of 80 to 85. They always and always miss cut off by 2 to 3 questions, and there is good amount like 40, 45, 50,000 लोग तो ऐसे होंगे ही कि जो इस प्लेटो के आसपास है। Why? Because the paper is designed in such a way that कि आप वहां एक लिमिट तक आप पहुंच जाओगे पर कट ऑफ नहीं पार कर पाओगे। वही क्योंकि the our fund of some questions will take you behind the cutoff and some questions will take you to the lead. Next is there are 90 plus range वाले candidates. What happens? They sometimes do clear cut off, but sometimes they don't. So if let's say they have written 3, 4, 5 prelims, they may have cleared 2, 3 prelims, then failed on couple, or they may not have cleared 2 prelims, then एक prelim clear हुआ, फिर से prelim नहीं हुआ, क्योंकि उनका the diciness or the luck in this case is based on the number of questions which they are not able to do, or rather say their focus is on the questions which are negotiable. उनको आप सही भी करोगे नहीं भी करोगे चल जाएगा, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनको आप गलत कर ही नहीं सकते। थर्ड कैटेगरीज कि जो मेरे पास में बहुत आके मिलते हैं वो है कि सीएसई तो कट ऑफ सर क्लियर हो जाता है बट फॉरेस्ट का एक बार भी क्लियर नहीं हो रहा। आई हैव लाइक समवन केम टू मी एंड ही सेड मैंने सर 3 प्रीलिम्स क्लियर किए पर मेरा फॉरेस्ट का कभी भी नहीं हुआ। I always like score plus 5 marks for the CSE cutoff, but never like plus 12, plus 13, which are needed to be forest. Again, in this case, also the differentiability between the questions matters the most. And fourth category is those who are just starting. पहला ही attempt है, दूसरा ही attempt है, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही बेसिक मंत्रा एंड फिलोसॉफी बन जाना चाहिए ये वाला वीडियो कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अगर if you understand this in the very early stages of your preparation, you'll never have prelims as a hurdle in your journey, which is for most of the others. कितने सारे कैंडिडेट्स रहते हैं जो 3-4 साल तैयारी करते हैं पर उनका prelims नहीं निकलता। मेजर कारण ये कि they haven't picked up the gist from it. So again, like going to the funda of some questions taking you away from the uh, cutoff and some questions above the cutoff. Let me tell you my story. So in last 3 years after 2021 till 2025, I have never scored, never got any polity question wrong. Last question which I got wrong in polity was of definition of state in 2021. Similarly, और एक वो क्वेश्चन जो यूपीएससी ने आई थिंक की में रॉन्ग है या फिर अब अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, वो द अबाउट दैट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजंस रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, व्हिच इज क्वाइट डिबेटेबल क्वेश्चन, बट apart from that I have never ever gotten any question wrong from the polity. Similarly, I have in the last 3 years I have never gotten any question wrong from the economy. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अब जैसे बात क्या है कि पॉलिटी से 18 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन आते हैं, एक इको से 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, तो 30 क्वेश्चंस तो मैं पक्का सही कर ही रहा हूं पेपर में। 60 क्वेश्चन तो मैं 60 मार्क्स तो मेरे अब यहाँ पे बन ही गए। कितने क्वेश्चंस में? 30 क्वेश्चंस में। अब मेरे पास 70 क्वेश्चंस है बाकी के 50 मार्क्स करने के लिए। आई होप यू गॉट द फर्क ना। अब इवन इफ लाइक आई डू some random questions wrong, some random questions around defense, गुची मशरूम का क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, पीकॉक टैरेंटुला वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, रैंडम कौन सी लेक्स कहां से पास करती है उसका क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उसका। बात क्या है कि आई एम द एब्सोल्युटली whichever non negotiables are,
कि जो मेरे पास बिल्कुल तैयार है, नॉन निगोशिएबल्स ऑफ पॉलिटी, नॉन निगोशिएबल्स ऑफ इकोनॉमी, जो मेरे पास बिल्कुल तैयार है, आई एम नॉट गेटिंग देम एनी रॉन्ग. Similar is the case with the questions around physical geography. साइक्लोन्स क्या है, क्लाइमेट क्या है, टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशनशिप क्या है, दी दी शिफ्टिंग ऑफ आइसोथर्म्स वाला क्वेश्चंस है. आई हैव नेवर गॉटन देम रॉन्ग, क्योंकि हियर आल्सो दीज आर 6-8 क्वेश्चंस, एंड होगा ही नहीं गलत तो फिर वो मेरे हमेशा ही एडिशन ही है. सिमिलर इज द, तो इससे क्या, सो द एंटायर पर्पस बिहाइंड दिस फिलोसॉफी इज दैट you prepare certain areas which are non negotiable. If I get questions away from these, wrong from these areas, my score will be getting away from the cutoff, I'll be going behind the cutoff. And let me tell you, those, any of those who are stuck in the range of 80, 85, 90, you are getting these questions wrong. These questions around economy, these questions are around polity, these questions around the basics of geography, basics of environment, you are getting them wrong. You are focusing on those superficial questions of defense exercises, of the random species, of the random flower, random fact, which actually don't matter, because they are neither deciding the cutoff, they are neither deciding where you are getting closer or behind the cutoff, neither they are deciding your fate in this selection. Only thing that they are deciding on is कि भाई तुमको फोमो मिल रहा है उसका. But these areas which they can't get them wrong वाले areas, which are, लेट्स से पार्लियामेंट वाला क्वेश्चन है, राइट्स वाला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल सेक्टर वाला क्वेश्चन है, बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस है, द इजी क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है. लास्ट ईयर राजा राम मोहन रॉय था, उससे पहले गदर पार्टी था. These questions are absolute, you need to get them correct. कोई इसमें कोई भी margin for error नहीं है. If you are getting them wrong, every wrong question will take you one step away and behind the cutoff. Similarly, अब क्या है ना कि अब since I needed to get a bit comfortable margin, I wanted to clear IFO's cutoff as well, because I realized this is that the most significant aspect of qualifying for the Indian Forest Services is clearing the prelims. So I got to know that I need to like prepare some questions, prepare some Pareto optimized topics, so that I'll be getting those questions correct, and they will get me the lead to above. So मतलब 80 in 94 cutoff है, तो फिर my score would hover around 110, 112, 116. Why? Because I'm getting these difficult questions. These I won't say difficult, but these Pareto optimized topic based questions correct. So there was this question on Chandraketugarh, 2 बारी पूछा वो. I knew that from the first instance I knew that the NCERT एंशिएंट एंड मेडिएवल मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये कुछ 10 मैप्स है, जिसमें इंडस वैली वाली मैप्स आते हैं, जिसमें ये अशोकन साइट्स वाले मैप्स आते हैं, जिसमें एंशिएंट एंड मेडिएवल में रॉक साइट्स के मैप्स आते हैं. ये 5-7 ही मैप्स है. आई न्यू दैट कि उन क्वेश्चन से क्वेश्चंस आते हैं, उन मैप से क्वेश्चंस आते हैं. तो व्हाट आई डिड, आई प्रिपेयर्ड देम थरोली. उसके बाद में आई फ्रॉम दी एरियाज अराउंड दी CAPF and CDS analysis, I got to know that they do ask questions around UNESCO heritage sites. उसके बाद में I realized that every year there are 1 or 2 questions from the environment and laws. Also, I got to know that there is a very tremendous chance of questions coming from साइंस बायो. क्यों? क्योंकि मैंने CDS, CAPF, PYQ के एनालिसिस इतनी बारी करके एक Pareto ऑप्टिमाइज्ड टॉपिक्स की शीट्स बना ली थी, जिससे आई नो कि ये क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होते ही है. सिमिलरली अब देखो, अब इसके बाद में आई हैव रियलाइज्ड कि देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, डिस्कशंस अराउंड व्हिच
wouldn't be much of a sense. One सो ऑन स्पॉट बेसिस वाले क्वेश्चन से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब वो पिकॉक टारंटुला पूछे, गुची मशरूम पूछे, CL20 HMS पूछे, कोकोआ सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ पे हो रहा है, इक्वेटर से कौन सी लेक पास करती है, भाषा ने कौन सी बुक्स लिखी, मुझे नहीं पड़ता फर्क. अब बात क्या है कि सम ऑफ दीज टॉपिक्स इफ आई एम एबल टू सॉल्व देम बाय माय बैकग्राउंड नॉलेज, बाय माय अंडरस्टैंडिंग, बाय माय some kind of picking up traits patterns from the my PYQ analysis, I'll be able to do so. अब जैसे question on there was this question on cocoa production in 2024. I knew that since the cocoa prices reached to the historic high of 1200 $12,000 per ton, and they generally hover around $2,000 to $3,000 per ton. From a background knowledge I knew that कि वहां से क्वेश्चन पिक किया है एंड वहां से ये आंसर होता है. बट अगेन I don't think that me knowing cocoa wala question would have made much of a big difference. But me not knowing question on environmental laws, on WPA, on the Environment Protection Act, where the bamboo is classified in the Forest Rights Act, Forest Conservation Act, would make a tremendous difference. Similarly, me getting questions wrong around Parliament, around Article 14, around Article 22 would actually be detrimental to my chances of getting into writing mains either for civil services, for the forest services, majorly because like आई नो ये क्वेश्चंस नॉन निगोशिएबल है ही, इन क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते. एंड ट्रस्ट मी, ईच वन ऑफ यू हु आर uncomfortable with prelims, have fear of prelims, stuck between the range of 80, 85 to 90, or not being able to clear the forest prelims, you are some way or the other way getting questions around these basics wala questions of the Parliament, Article 14, Article 19, the banking, the external sector, the basics of geography around temperature, around the cyclones, around the water currents, around the shifting of isotherms incorrect. And some of you, what your strategy is, rather than focusing on these non-negotiable areas, you directly jump onto these on-spot questions. You cannot prepare for this on-stop wala questions. Let's say लेक कितनी, इसमें से कितनी लेक से इक्वेटर पास होता है, कितनी दुनिया में 10,000 लेक्स है. Will you be able to actually prepare a list for those 10,000 lakes? Similarly, there will be every year new species of peacock, new species of insect, new species of ये रहेगा. Will you be able to like learn about all of it? And see from the side of examiner also, na, does examiner expect you to know all of it? But examiner does expect you to know what are basic principles of polity, economy, the basics of geography, the basics of environment. And smartness lies in where you are prepared to get to, you are preparing some Pareto optimized topics and trying to get them correct via some additional efforts that you put in, via some additional help, via some additional mentorship that you should get it. And I'll be making a separate video on how I categorized on these three things and how I actually ensured that I'm always getting the non-negotiables correct. I am also excelling in those areas from which I should get this question correct, and how I am maximizing my score on spot. And to do that, you need to go there with a basic fundamental knowledge. Even for the elimination, even for the mastering smart guessing work, you need to have certain background knowledge with you. And that background knowledge actually comes from the foundation and the enrichment. Foundation is non-negotiables galat karne nahi hai, and non-negotiables are around polity, the economy, the basics of geography, modern and ancient and medieval India, and environmental basics. So these 5 things, if you are getting them correct, you will be handling like good close to 60-65 questions.
अब बात क्या है कि major thing with these 60-65 questions is they have potential to get you correct 50 net correct. So 50 net correct means here आपने 60 अटेम्प्ट करे और 50 नेट करेक्ट हुए तो फिर इट इज 47 into 2 94 मार्क्स यू आर गेटिंग बाय दीज क्वेश्चंस ओनली. अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गुच्ची मशरूम का क्वेश्चन पूछा है या फिर दी संगम एरा का है या फिर विजयनगर के कॉइन्स का क्या नाम था. यू डोंट नो. अब इट डजंट मेक मच ऑफ अ कंसर्न. अब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अब हमें स्कोर को और एनरिच करना है, पुश करना है, देन अब स्मार्टली अब एनरिचमेंट करो परीटो ऑप्टिमाइज टॉपिक से. परीटो ऑप्टिमाइज टॉपिक्स एनवायरमेंट में अब कुछ टाइम से आईआर मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इन एरिया से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. सिमिलरली एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल लॉ से डब्ल्यूपीए, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन सबसे क्वेश्चंस आता ही आता है. एक क्वेश्चन तो पक्का आता है. सिमिलरली कन्वेंशन से क्वेश्चन, यूएनएफसीसी है, फिर उनके एडिशनल प्रोटोकॉल्स है, सीबीडी है, बॉन कन्वेंशन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाले कन्वेंशन है, इन सबसे भी क्वेश्चंस आता है. सिमिलरली भले ही अभी 2 साल से मिसिंग है प्रोटेक्टेड एरिया स्पीशी वाले क्वेश्चन, अभी आजकल वो रादर देन asking about the species and their protection, they are asking about the species behavior. पर अब कितनी स्पीशी कितने बिहेवियर प्रिपेयर करोगे. एंड जैसे बीच में 2 साल 20, 21, 22 में आईआर वाज कंप्लीटली मिसिंग. आई थिंक 20, 21 में 2 साल में आईआर था ही नहीं पेपर में. फिर एकदम से 22 में आया, फिर 23, 24 में तो बहुत आने लगा है. Similar can be the case with ये वाला also. Similarly, like the ancient medieval में I talked about the Ashokan sites है, Paleolithic sites है, Neolithic sites है, Mesolithic sites है, Indus Valley sites है. Mapping and sites से questions आती है. Geography में river से question आती है. Geography में river, their origin, river systems. Similarly, mapping से question आते हैं. तो what I did, I strategically and Pareto optimized my efforts for these additional topics rather than reading some random कोई सा भी कंटेंट. रैंडम 1000 पेज का कंटेंट पढ़ लिया, रैंडम 2000 पेज का कंटेंट पढ़ लिया, रैंडम द हिंदू के कंपाइलेशंस पढ़ लिए, फिर कितने भी मतलब पीटी 1000, पीटी 1200, पीटी 1500 पढ़ लिए. They don't make much of a sense. I have never read PT 365 in last 3-4 years of my prep. Initially, I was ignorant. I didn't crack this strategy of getting non-negotiables correct. That's why I used to read them. But now I don't, because I know they aren't making any concern. They are just adding burden of study and underconfidence to my preparation strategy. And for the Pareto optimization and for like understanding कि मतलब मैं ये कैसे क्रैक कैसे किया. Of course my understanding and my analysis is there, but I did thorough understanding of 10 years of PYQ. आजकल लोग कह रहे हैं कि 1979 से कर लो, फिर उसके बाद करेंगे कि भाई 1926 से सुभाष चंद्र बोस जी ने जो PYQ लिखा वो भी तुम ही अभी PYQ लिखो. It's not feasible, and even pattern has also changed a lot. The requirements have changed. It's not needed. I have myself done PYQs from 1991 and they are of no use. उससे बढ़िया आप you do CDS, CAPF, NDA के PYQs. They will get you thematic understanding, Pareto optimized thematic understanding. Let's say there was this question on International Mother Language Day. It was, I think, in 2021. This similar theme questions was repeated in CAPF. Similarly, there was this question on UNESCO Heritage Site. 2024 में आई थिंक सिविल्स में था, उससे पहले 2023 में एनडीए में था, फिर सीडीएस में था. Similarly, there was this question on Jainism and Buddhism and their motives. Again, UPSC में भी था, CDS CPF में भी था. There will be n number of topics you can actually relate to and do have a correlation whereby you can see themes. I am not seeing questions, but I am seeing Pareto optimized themes are repeated from here to the CSE. So do 10 years of this just to gauge, have an understanding कि कैसे किस width तक questions आते हैं. But उसके बाद में sincerely do follow this CDS CPF and NDA के questions. उसके बाद में भी टाइम मिलता है, then do UPPCS, then do MPSC वाले questions and then BPSC वाले questions, because I felt these are a bit more aligned
and you can add Haryana wale also. Do this for 3-4 years of paper. Why I am saying this? You would know that कि कैसा भी पेपर आए, कैसे भी क्वेश्चंस आए, कैसे भी areas आए, you would be knowing that there are certain non-negotiable areas which I talked about. They always appear in your paper, कोई सी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो. And 10 years का PYQ analysis से and NDS, CAPF and CDS की analysis से you will be able to arrive at Pareto optimized topics कि वो organizations पूछ रहा है, laws पूछ रहा है, वो specific protected areas के बारे में पूछता है, वो उसके details के बारे में पूछता है. सिमिलरली कुछ करंट में कुछ कोई आरबीआई के इनिशिएटिव्स है, जैसे यूपीआई है, बैंकिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ट्रांजैक्शंस है, इनके बारे में पूछता है. तो फिर यू विल बी नो कि जब हम पढ़ेंगे, जब हम प्रिपेयर करेंगे, वी विल हैव अ डिफरेंशिएट एक्स्ट्रा फोकस ऑन दीज टॉपिक्स रादर देन रीडिंग सम रैंडम 2000 3000 4000 पेज का कंटेंट. एंड it would also mean that कि हमें random topics को नहीं prepare. अब जैसे there was this question in 2023 upon what does beta mean. If you are someone who actually knows a bit about markets, अब तुम अल्फा भी प्रिपेयर करोगे, बीटा भी प्रिपेयर करोगे, गामा भी प्रिपेयर करोगे, डेल्टा भी प्रिपेयर करोगे, क्या फर्क है? फिर आईवी स्पाइक कैसे आता है? फिर उससे यू विल बी स्टडीइंग की ब्लैक शोल्स मॉडल ऑफ क्या है? डज इट मेक सेंस? आर यू राइटिंग एग्जाम फॉर सीएफए? नो ना. So it doesn't make sense. Similarly, there was this one question on defense exercises. उसके बाद में फिर 23, 24, 25, 26 कभी भी रिपीट नहीं हुआ वो. अब मेन थिंग इज दैट एवरी ईयर देयर विल बी मोर देन 50 डिफेंस एक्सरसाइजेस. विल यू बी प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ इट? अगर 50 डिफेंस एक्सरसाइज प्रिपेयर करने का तुम्हारे पास में टाइम है, तो फिर उससे बढ़िया तो फंडामेंटल राइट से इतना रट लो कि उसके बिना मतलब तुम क्वेश्चन गलत कर ही नहीं पाओगे. So it doesn't make much of a sense to prepare these topics and run behind those topics. And फिर मतलब फिर लोग क्या करते कि रैंडम उनके मटेरियल दिखाते और फिर बोलते कि देखो मेरे इसमें ये डिफेंस एक्सरसाइज कवर्ड थी. तुम्हारा 3000 पेज का कंटेंट था. 3000 पेज के कंटेंट में एक सवाल आया तो फिर दैट टू यू आर क्लेमिंग. डज इट इवन मेक सेंस टू यू? आई होप लाइक आई एम एबल टू कन्वे माई पॉइंट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट. माइंडसेट इज फर्स्टली the infinite syllabus of the prelims can actually be condensed, and that condensed into 3 areas which talked about, which are non-negotiables, which are Pareto topics, and on spot wale topic जो भी है. and we'll be studying for it. केवल तुक्केबाजी से, केवल गेस वर्क से, केवल स्मार्ट गेस वर्क से एग्जाम नहीं निकलता. ट्रस्ट में नहीं निकलता. Even those who are getting them, some way or the other, they have their basics sorted out. They know कि polity वाले questions, they know what federalism is, they know how monetary policy works, they know what monetary policy committee does, they know difference between the balance of payment and the balance of trade. I hope you got the point. Study is a bit necessary and particularly focus on those areas which are non-negotiables, and after that comes the understanding of exam patterns to actually ensure that you are eliminating, to ensure that you are developing some Pareto optimized topic list, and most importantly to help you gauge the language of the examiner and mindset of the examiner. So in सब के लिए we'll be solving PYQs. I'll be me and my friend Naman will be helping you a lot through this channel and through such videos and via our initiative at Nurturing for UPSC, to help you like understand mindset, understand exam pattern, understand the Pareto optimized topics, and also I'll be particularly helping you out in what to study and how to study. This is the very appropriate time to actually re-strategize and reorientate your entire prelim strategy while simultaneously focusing on your mains approach. कितना भी कर लो, मेंस से पहले हमेशा ही प्रीलिम्स आएगा. सो प्रीलिम्स करना बहुत ही जरूरी है, बट याद रखना हमेशा ही प्रीलिम्स, केवल प्रीलिम्स करके कोई सिलेक्शन नहीं लेके जाता. फॉर दैट यू विल आल्सो नीड टू डू मेंस. सो दिस मंथ ऑफ डिसंबर and a bit of January is actually there.
so that you'll be working on your strategy, your approach, and how you are going to proceed with the prelims. A bit of brushing up of your prelim skills via solving PYQs, via discussing these different strategies, via like reorienting yourself for new basic books on which you may have missed out on, and then do a bit of mains as well. uh, till then, if you have any queries, just get back to us on our official telegram chat id, which is at the rate NFU underscore official. uh, I hope you are right on track, and my uh, attempt via this video actually cleared a lot of cloud around the prelims preparation and how you should actually approach the entire prelims for 2026 civil services and IFOS mains. Let me know if you like need any particular help from me, considering my background and considering the vast experiences that I have. Till then, Jai Hind, and keep revising and focus on yourself. Bye bye.